हेलो यारो। आज मैं रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9(3) को कवर कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9(3), सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और both on which tax shall be paid by the recipient on reverse charge basis. First, supply of services by GTA in relation to ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। इसमें दो कैटेगरीज है। नंबर 1, जहां जीटीए ने ऑप्ट किया है टू पे द टैक्स एट द रेट 5%, दैट मीन्स 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी। सेकेंड कैटेगरी where GTA opted to pay the tax at the rate 12% IGST, that means 6% SGST, 6% CGST। जहाँ पे जीटीए ने 5% ऑप्ट किया है अगर सर्विस प्रोवाइड करता है टू रजिस्टर्ड पर्सन तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा एंड रिसिपेंट इज लाइबल टू पे द टैक्स ऑन फ्रेट। अगर सर्विस प्रोवाइड की जाती है टू नोटिफाइड पर्संस तो भी रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल ऑन अबाउट नोटिफाइड पर्संस इज लाइबल टू पे जीएसटी। Notified persons means any factory registered under Factories Act, any society registered under Societies Registration Act, any cooperative society established by or under any law, any body corporate established by or under any law, any partnership firm including LLP, whether registered or not under any law, including association of persons, that means AOP, and any CTP। अगर सर्विस प्रोवाइड की जाती है टू एनी अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन दैट मीन्स अदर देन नोटिफाइड पर्सन तो एग्जेम्प्ट, दैट मीन्स नो जीएसटी। सेकेंड कैटेगरी दैट मीन्स जीटीए ऑप्टेड टू पे द टैक्स एट द रेट 12% विथ फुल आईटीसी। अगर सर्विस प्रोवाइड की जाती है टू रजिस्टर्ड पर्सन in such a case GST is payable under normal charge, that means forward charge by GTA। अगर सर्विस प्रोवाइड की जाती है टू नोटिफाइड पर्सन इन सच ए केस फॉरवर्ड चार्ज इज एप्लीकेबल एंड जीटीए इज लाइबल टू पे द टैक्स। अगर सर्विस प्रोवाइड की जाती है टू एनी अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन दैट मीन्स अदर देन रजिस्टर्ड एंड नोटिफाइड पर्संस तो एग्जेम्प्ट, नो जीएसटी। इन नटशेल अगर सर्विस प्रोवाइड की जाती है टू एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन नोटिफाइड पर्सन तो ऑलवेज एग्जेम्प्ट होगा, नो फॉरवर्ड चार्ज, नो आरसीएम। अगर सर्विस प्रोवाइड की जाती है टू रजिस्टर्ड पर्सन अगर जीटीए ने ऑप्ट किया है 12% तो फॉरवर्ड चार्ज अदरवाइज आरसीएम। नेक्स्ट, अगर सर्विस प्रोवाइड की जाती है टू नोटिफाइड पर्सन अगर जीटीए ने ऑप्ट किया है 12% तो फिर फॉरवर्ड चार्ज अदरवाइज रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल। ये एंट्री एप्लीकेबल नहीं है ए डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी or local authority government agencies which has taken registration under CGST only for the purpose of deduction of tax under section 51 and not making any taxable supplies of goods or services. Second, service provided by way of renting of motor vehicle designed to carry the passenger where the cost of fuel is included in the consideration। किसके द्वारा? Any person other than body corporate not opted to pay the tax at the rate 12% IGST, that means 6% CGST, 6% SGST to body corporate located in taxable territory. Body corporate is liable to pay the tax under reverse charge। Third, sponsorship services provided by any person to body corporate, firm, LLP, person liable for the payment of the tax, firm, body corporate, LLP located in taxable territory। Fourth, supply of services by way of security personnel by any person other than body corporate to registered person located in taxable territory, he is liable for the payment of tax under RCM। अगर सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी तो फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा।
ये एंट्री एप्लीकेबल नहीं है डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज registered only for deduction of tax under section 51 and not making taxable supplies of goods or services, and to a registered person paying tax under composition scheme. Fifth, supply of services by director of company or body corporate to body corporate or company. Company or body corporate is liable for payment of tax under reverse charge. एमडी, डब्ल्यूटीडी एंड ईडी ये तो होते हैं एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जबकि एनईडी एंड पार्ट टाइम डायरेक्टर्स नहीं होते हैं एम्प्लॉय। अगर कंपनी रेमुनरेशन देती है टू दूस डायरेक्टर्स हु आर नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, दैट मीन्स जिनका टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 194J ऑफ इनकम टैक्स, इन सच ए केस कंपनी इज लायबल for the payment of tax under reverse charge. If remuneration is paid to those directors who are in employment, that means TDS under section 192. अगर आपको शेड्यूल 3 याद है तो उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का अगर रिलेशन होता है तो इन सच ए केस नो जीएसटी इज एप्लीकेबल। सेम अगर रेमुनरेशन अगर उन डायरेक्टर्स को देते हैं जो इन एम्प्लॉयमेंट है तो नो जीएसटी। अगर फी for professional services, technical services and sitting fees to those directors who are in employment of the company which is declared separately, in such a case company is liable for RCM। ये important है, इस पे जुलाई में क्वेश्चन भी आया था। Sixth, supply of services by way of transfer or permitting the use or enjoyment of copyright covered in Copyright Act। इसमें दो पार्ट्स है। नंबर 1, relating to original music, dramatic and artistic work by म्यूजिक कंपोजर एंड फोटोग्राफर और आर्टिस्ट के द्वारा सर्विस दी जा रही है। किसको दी जा रही है? म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर। म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर इज लायबल फॉर रिवर्स चार्ज। सेकेंड पार्ट, relating to original literary work by author to publisher. Publisher is liable to payment of the tax on reverse charge and he must be located in taxable territory, and music company producer should also be located in taxable territory. RCM is not applicable in relating to original literary work where author has taken registration and filed a declaration to pay the tax on फॉरवर्ड चार्ज बेसिस। सेवंथ, अगर सर्विस सप्लाई की जाती है बाय इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ही इज लायबल टू पेमेंट ऑफ द टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। Where insurance policy sold through ECO not being licensed as insurance agent, RCM not apply। 8th, अगर सर्विस सप्लाई की जाती है बाय रिकवरी एजेंट टू बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लायबल फॉर रिवर्स चार्ज। 9th, अगर सर्विस सप्लाई की जाती है बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, दैट मीन्स इंडिविजुअल होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी टू बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी। अगर रिकवरी एजेंट है तो उसमें बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तीनों है, जबकि अगर सर्विस सप्लाई की जाती है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के द्वारा तो बैंकिंग कंपनी एंड एनबीएफसी ओनली, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। 10th, अगर सर्विस सप्लाई की जाती है बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी तो बैंकिंग कंपनी लायबल होगी और मस्ट बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। 11th, if service supplied by an agent or business correspondent to business correspondent, तो business correspondent is liable for GST on reverse charge। 12th, services provided by an individual advocate, senior advocate, firm of advocate by way of
legal services directly or indirectly to any business entity. Business entity located in taxable territory are liable for payment of tax on reverse charge basis. लीगल सर्विसेज मीन्स बताइए क्या होता है? Any services provided in relation to consultancy or assistance in any branch of law in any manner and include representation services before court, tribunal or authority. 30th, services supplied by an arbitral tribunal to any business entity. Business entity located in taxable territory are liable for payment of tax on reverse charge basis. 14th, services provided by central government, state government, union territory or local authority to business entity. Business entity located in taxable territory are liable for the payment of tax on reverse charge basis. ये एंट्री एप्लीकेबल नहीं है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज टू any person other than central government, state government, union territory, local authority. Second, services in relation to an aircraft or vessel inside or outside the precincts. Third, transport of goods or passengers. 15th, services by way of renting of immovable property by central government, state government, union territory or local authority to any person registered under GST Act should be located in taxable territory are liable for the payment of tax on reverse charge basis. 16th, services supplied by way of transfer of development right that is TDR or floor space index that is FSI including additional FSI for construction of project. किसके द्वारा? By any person to promoter. Promoter is liable for the payment of tax on reverse charge basis. 17th, अगर long term lease है that is 30 years or more against consideration in the form of upfront amount called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other names and or periodic rent for construction of project by any person to promoter. Promoter is liable for the payment of tax on reverse charge basis. 18th, जहाँ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज परचेज की जाती है फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लेस देन 80%. इन सच केस तो जहाँ पे उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है जितना शॉर्टफॉल होगा 80% में उस पे प्रमोटर इज लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. 19th, in case of cement or capital goods supplied by unregistered person to promoter, promoter is liable on reverse charge basis. 20, import of service. Any service supplied by any person from non-taxable territory to any person other than non-taxable online recipient. Person other than non-taxable online recipient is liable for the payment of tax. 21. Service supplied by way of transportation of goods by a vessel from a place outside the India up to the custom station of clearance in India by person located in non-taxable territory to importer. Importer is liable for the payment of tax on reverse charge basis. 22. Lending of securities under Securities Lending Scheme 1997 of SEBI by lender to borrower. Borrower is liable for the payment of tax on reverse charge basis. 23rd,
supply of services by member of Overseas Committee to RBI. RBI is liable for the payment of tax on reverse charge basis. Some important points. बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स ये कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है. ये कंपनी पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, फॉरेन कंपनी, बट डज नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल, HUF, firm including LLP, AOP, BOI and any cooperative society. Person, next point, person who is opted composition scheme are liable for the payment of tax on reverse charge basis without any ITC. Thanks.